Hello guys, welcome back to Football Content Factory. This is the match reaction of Liverpool versus Brighton. Liverpool 2, Brighton 1. Nerve-wracking in the end. It was like something that you really don't want it to go in the end like this, but it was good match. Finally, we won top of the table. Yeah, happy days. Looking forward to the Man City and Arsenal game. So we started off very poorly. Worst possible start we could have imagined. Danny Welbeck scored the goal. Probably Bradley was out of position and maybe he was in a very attacking position. Obviously, Van Dijk maybe could have done better with his clearance, but I wouldn't blame him too much. First half, in terms of attacking wise, it was really disjointed front three. ऐसा लगा था कभी उन्होंने साथ में खेला ही नहीं है. It was really poor. Bradley defensively very poor. Adingra was running riot, like on Bradley. Konza was good. Van Dijk decent. Gomez was alright. McAllister was brilliant. So was like poor. Endo was alright. Um, front three, like I said, really nothing. Did nothing. They looked really disjointed. So second half, we came into the game. We played better. We could have scored, should have scored more, and especially in the first half as well, with Salah having so many chances. They were not clear-cut chances, but they were half decent chances. On any other day, Salah could have scored a hat trick, in my opinion. But in second half, we played much better. Nunes was good. Diaz was looking good. Salah scored obviously the winning goal. Could have scored another one with the header, and obviously one with the Luis Diaz from the counter-attacking position. Luis Diaz pass. But yeah, overall, I'm happy. I'm happy. Ishan bhai, thank you so much for joining this call. And क्या लगा आपको? कैसा रहा आपका? कैसा कैसा लग रहा है आपको मैच के बाद? Told you it was Brighton going top to of be the table. nerve wracking. I told you it was going to be nerve wracking. Didn't I? Yeah, yeah, I know. I thought it was going to be an easy win, to be very honest, but you were spot on there. You were spot on. At Adingra, I What are your mentioned thoughts about about it. the match? Like I mentioned about like Adingra in the video that we did. He was Yeah, yeah, yeah. pulling Bradley all over the place in the first half itself. Exactly. Their strategy was to put in early balls to push him Bradley out of position and then get Kwanzaa out. So there was a little bit of gap opening between Kwanzaa and Virgil there, but their goal that is scored in the initial minutes wasn't. It was a brilliant goal. Actually, it was more of a them scoring a brilliant goal than us. Like they were particularly small mistakes in those movements. Like Kwanzaa could have stick to his man better. Virgil could have cleared the ball better, but overall it was a brilliant goal. When then we started playing again, we started moving the ball in the right areas. McAllister was brilliant. He grew and grew in the Liverpool shirt throughout the game. He was probably my Absolutely. man of the match. And Yeah, one thing, Nunes wasn't involved in the first half. That's the one thing that I thought that actually didn't work for us. But then he started working on the left, he started working on the right, he started working the defenders, and that opened up the space for the other attackers to move. Salah came inside, and Salah could have, like, we didn't have too many openings, but there were openings to make openings. Like we didn't get the final pass, but there were chances to to get inside and score a few. But like overall, it was a bit shaky. But okay, like it happens after international break, after a longer period. But overall, it was a quite brilliant and nerve-wracking game to be fair. Like in the last few minutes, Liverpool always give you a 5 to 10 minutes window to attack. Like in whatever, if you are Man City, Sheffield United, whatever team you are, they will always give a 5 to 10 minutes window for everyone to attack them. But doing that at the while you are winning 2-1 and you need a win to go at the top of the table, it was nerve wracking to say the least. yeah. The last 15 minutes was like, yeah, please jaldi khatam kar do. It looked really, like we look really shaky at the back. Especially जब dunk का header Keller ने save किया था, I was like, oh my god. I mean, like for a trouble or what?
I was it was more Brighton. worried about like Adam Lallana scoring there, like because these sort of things write themselves up every season. We have seen Yeah, them like a story building up, a former player coming up and hopefully like doing the thing against their former club. But yeah. yeah, it was brilliant game. It was actually Tactically, a it was a good. brilliant. It was very close decision in the end. The Lallana which left wide. It was not Yeah, really much. It was a good opportunity for actually Lallana to yeah. score. But yeah, overall it was a good game in my opinion. Salah, I mean, on any other day, Salah should have scored a hat trick in my opinion. He was really poor. Like in fact, front three pura disjointed lag raha tha right from the beginning. Uh, मतलब Diaz second of what you rightly mentioned is he went to the left, he went to the right, so that opened up space for other attackers as well. But in front in first half, that was not really much of a thing to say. But Nunes सिर्फ center पे खड़ा था, and obviously they play with a three center back, so that was obviously going to be difficult. But Salah को काफी सारे chances है. Luis Diaz apart from the goal, like उसके अलावा मैंने सिर्फ पूरे फर्स्ट हाफ में उसको वही देखा था जो एक उसने ट्रैक बैक किया था जो अराउंड 35th मिनट पर था. उसके अलावा आई डिडंट रियली सी हिम मच पूरे गेम में. सेकंड हाफ ऑब्वियसली ही वाज वेरी गुड. ही वाज लाइक अ प्रॉपर लुइस डियाज, वेरी ट्रिकी ड्रिबलिंग, ट्राइंग टू ड्रिबल पास प्लेयर्स. एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा एक हल्का सा फुट सिर्फ ऑफ साइड हो गया, नहीं तो इट वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट गोल एक्चुअली. व्हाट अ पास फ्रॉम साला देयर. बढ़िया बढ़िया पास था. Brilliant. Like सेकंड हाफ. we didn't see Diaz because most of the game was happening in the at the other side of the pitch. Actually, they wanted to attack Yeah. on that side, and we found most of our opening on the Salah side. That's why. राइट. इट वाज अ वेरी टिपिकल परफॉर्मेंस ऑफ लिवरपूल, लाइक पहले कंसीड करना, फर्स्ट हाफ में कुछ खास नहीं खेलना, एंड सेकंड हाफ वी मेक अ कमबैक. इट वाज अ प्रॉपर टिपिकल लिवरपूल परफॉर्मेंस जहां पे लाइक you you expect to like come back in the game in the second half, especially when you're attacking at the top end. But first half it was obviously poor. We conceded a goal early, and that actually worked in our favor because it gives us like ample amount of time to come back in the game. So that was again a good, but इतनी जल्दी कंसीड करना, ना was like कि यार क्या हो क्या रहा है ये. ब्रैडली सेकंड हाफ वाज अगेन ब्रिलियंट, बट फर्स्ट हाफ में भी मुझे ऐसा लगा कि यार उसने अटैकिंग वाइज मे बी एंड इतना ज्यादा अटैकिंग कर रहा था कि वो अडिंगरा उसको बार बार एक्सपोज कर रहा था टुवर्ड्स. एंड कौनसा भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे कि जब कोनाटे खेलता है, सो ही कवर्स द पोजीशन ऑफ ट्रेंट एज वेल एंड आल्सो हिज ओन पोजीशन. सो डिफेंसिवली इज वेरी गुड because he has that pace and all that, and maybe because Konza doesn't really have that experience, it's only his first season, so rightly so. But second half he was very good. जो गोमेज, आपका क्या क्या थॉट्स था आपका जो गोमेज? डिड यू सी हाउ यू आर प्लेइंग लाइक द इन्वर्टेड लेफ्ट बैक लाइक इन ट्रेंड्स पोजीशन? आई वाज लाइक क्या क्यों? What's the need? Why are you doing it? You don't have that passing range. You're not going to give any sort of assist or do anything creative. So why not just stick to the left back position, which you are He almost obviously assisted good Salah. at defensively? He almost assisted Salah with that like a lovely ball. Was it McAllister or Yeah, Salah? Yeah, but like in the first half when it he was was. coming inside, Yeah, it that was was actually McAllister, wasn't it? McAllister cross, Yeah, yeah, which yeah. I thought so. just hit like post से थोड़ा सा बाजू से गया. But yeah, it was a good हाँ. cross. But overall अगर देखोगे तो यार मेरे को समझ नहीं आया कि यार गोमेस इतना क्यों, like he's playing in Endo's position at times. It was look like यार एंडो की पोजीशन में क्या कर रहे And हो भाई आप? Endo was playing in this like at times we had three centre backs playing. Like क्योंकि ब्रैडली कॉट आउट हो रहा था, गोमेज इन्वर्टेड था, तो क्वांसा को जब कवर करने जा रहे थे लाइक इनिशियली लाइक फर्स्ट 45 मिनट्स में मैनी टाइम्स एंडो वाज अवर लास्ट डिफेंडर. उसने बहुत Yeah, ब्रिलियंटली कवर किया. एक चांस भी मिला था मेरे ख्याल से 50-50 चांस तो नहीं कह सकते इसको, 50-50 था, बट राइट में नहीं आने दिया. आई थिंक इट वाज वेल अगेंस्ट वेलबैक और सम लाइक या इट वाज yeah. अगेंस्ट वेलबैक. तो Finally, लाइक Endo को I think हाँ, एंडो डिफेंसिवली बहुत अच्छा था. ब्रैडली अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा था. डिफेंसिवली ही वाज गेटिंग कॉट आउट टू मेनी टाइम्स. और yeah, far too अदरवाइज many. मैकेलिस्टर वाज बीइंग लाइक सोबोस्लाई का लोग फिर अगेन कहेंगे कि ही वाज पुअर, बट आई थिंक कि सोबोस्लाई को थोड़ा राइट में पुश करना दैट हेल्प ब्रैडली एंड ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम. उसकी वजह से हमें थोड़ी स्टेबिलिटी मिली. और जो गोल भी किया साला ने, दैट वाज सोबोस्लाई शिफ्टिंग टू द राइट, फाइंडिंग द प्लेस and space.
तो उसकी वजह से क्या होता है कि सोबोस्लाई की वजह से प्लेयर्स बाहर जा रहे थे, एंड मैकेलिस्टर सेंटर में थोड़ा, जितनी जगह मैकेलिस्टर को सेंटर में मिल रही थी वाज बॉसिंग इट, उसको थोड़ी भी जगह दो, इज वर्ल्ड क्लास टैलेंट एट दैट. आवाज नहीं आ रही आपकी? Am I audible now? या. So I was just saying, let's get to the player ratings. केलेहर का क्या क्या रेटिंग दोगे आप केलेहर को? कैलेहर को लाइक 7.58 ही, मतलब फर्स्ट हाफ में तो, सेकंड 60-70 मिनट्स तक तो कुछ करने को ही नहीं रहा, बट जब whenever he was called upon in the last few minutes he was positive. कुछ बॉल आगे आके पकड़ी उसने, काम डाउन किया सिचुएशन को, वेरी गुड. आई थिंक ही मेड अ वेरी गुड सेव, जो डंक के थे दो बैक टू बैक जो हम्म. सेव हुए थे वो ही था, हम्म. बट एक एक नर्वस मोमेंट था उसी उसी टाइम के बीच में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, जहां पे उसको एक क्लियर करना चाहिए था, बट ही गेव इट बैक टू ब्रैडली. सो दैट वाज अ लिटिल बिट नर्वस कि यार आप क्लियर कर लिटिल बिट देते. शेकी है. दैट लुक्ड अ लिटिल नर्वस. सो या, बट ओवरऑल ही वाज वेरी गुड. आई वुड से 7.588 is the right one. um Bradley. 7 again, like struggled a bit defensively. Offensively उतने फाइनल थर्ड में एंट्रीज तो नहीं हो पाई, बट ही वाज विनिंग द बॉल बैक, प्रेसिंग अच्छी थी. For me, I would give Bradley a 6, simply because first half mein he was caught out far too many times, especially defensively and attacking wise. It wasn't really that much, but yeah, he was getting into good position, but he could have made a better decision with his passing and overall. And second half, he was good defensively as well, attacking as well, but passing could have been a little bit better. So I would give Bradley a 6. So that makes it 6.5 for him. Kwanzaa. Gonza again 7.5, 7.5. Yeah, I Didn't agree. do anything wrong, didn't do anything like out of this world. There was one challenge in like at the last of the game where he did brilliantly, but like I said, didn't do anything wrong, but didn't do anything out of this world, I guess. Yeah, I agree. I absolutely agree. So it's going to be same rating for me, 7.5 as well. Van Dyke. Van Dijk again 7, didn't have to do too much work. Like the all of the game was, all of the attacking entries was from the right of our side. Uh, तो इसलिए उसको कुछ करने को कुछ खास था नहीं, बट जो भी किया अच्छा किया. 7.5 अगेन. आपको लगता है वैन डाइक थोड़ा बेटर कर सकता था, जो वेलबैक ने गोल किया था, थोड़ा सा लाइक बेटर हो सकता था? कर सकता था, बट अगेन दिस थिंग्स हैपेंस इन, लाइक इतनी जल्दी होती है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते. उसने जो किया वो क्लियर ठीक ठाक किया था, पर गोल जो उसकी फिनिशिंग थी वेलबैक की, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक रियली रियली गुड फिनिशिंग. Yeah. So yeah, आई हैव I नो think कंप्लेंट्स हियर, आई हैव नो कंप्लेंट्स हियर. yeah, probably it's debatable actually, very subjective. कि कुछ बोलेंगे कि यार बॉल उसके लेग से इतना दूर तक, इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर हिम टू हिट इट लॉन्ग. सो नहीं, it's लॉन्ग का चांस नहीं था debatable. वहां पे, वो साइडवेज को थोड़ा पास कर सकता था, आउटसाइड को थोड़ा पास कर सकता था, और कुछ नहीं कर सकता था वो इससे. सब्जेक्टिव है, बट हाँ, इफ आई हैव वो टू गिव रेट, सब्जेक्टिव है. मैं भी 7 ही दूंगा. लेफ्ट बैक जो गोमेस. 7. फर्स्ट हाफ में इन्वर्ट कर रहा था, कुछ ज्यादा खास उससे फर्क नहीं पड़ रहा था हमारे अटैकिंग प्ले पे. सेकेंड हाफ में ही केम इनटू द गेम, स्ट्रेच किया जैसे वहां पे, तो उसकी वजह से डियास को भी थोड़ा बॉल देखने को मिला वहां पे, अच्छा किया मतलब. बट स्टिल जो इन्वर्ट करने का गोमेज को थोड़ा सा डिसीजन था, वो शायद मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहा फर्स्ट हाफ में. हालांकि हम क्राउड करना चाहते थे मेरे ख्याल से, जो सेंटर ऑफ द एरिया पिच था उनका, बट स्टिल डिसेंट इनफ. गोमेज एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, बट वही वो तो जो जो उसको इन्वर्ट करा रहे थे, दैट्स मोर ऑफ अ टैक्टिकल डिसीजन देन हिज ओन. सो आई डोंट थिंक Yeah. ही प्लेड अ बैड गेम. ही प्लेड हिज, लाइक ही did his own defensive duties very well. Attacking तो कुछ खास नहीं था, but again, he's not meant to attack. So for me, he was very good. He was like, yeah, 7, 7.5. I'm happy with it. Midfielders, midfield Endo 8. Endo 8. Yeah, 8. I think Yeah, he was covered very the good. ground well, won his challenges, kept it simple as usual, did the right things, did all the right things. Attacking wise इसको कुछ खास करना भी नहीं चाहिए, जो उसका जॉब है उसने बेसिकली did it to perfection.
Right. I agree. So Endo for me, 8 as well. Suppose like Soboslai कंट्रोवर्शियल होने वाला है थोड़ा सा, आई थिंक सो, बट 7. 7. I think first half Sabozla was really poor. कुछ he was not involved in the game, मेरे opinion में. Second half he was much better. At least वो ball carry forward कर रहा था. There were times he was carrying the ball forward. So I would give him 6. Sabozla. It was decent. He wasn't bad. उसने एक shot भी लिया था long range, which was like थोड़ा सा बाहर गया था. So I बाहर would गया say था. he was. हाँ. बट पता क्या है, डिफेंसिवली शेप, वो शेप मेंटेन करने में बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल था वो. हमें टीवी पे कई बार नहीं दिखता है. वो जो सेकंड हाफ में अर्ली बॉल्स नहीं निकल रहे थे ना, उसके ब्रैडली वाली साइड में, वो इसीलिए था कि वो शेडो वहाँ पे और प्रेसिंग हो रही थी सोबोस्लाई की तरफ से. तो वहाँ पे शेडो, अगर आप कह लो, अगर शेडो प्रेसिंग कह लो चाहे प्रेसिंग कह लो, उसको जैसे मर्जी गेगिन प्रेसिंग कह लो, तो वो एक डिफरेंस था कि उसमें हमें थोड़ा सा पॉजिटिव, हम फ्रंट फुट पे आ सके उसकी वजह से. Right. But still, I would still give him 6. It could have been better, but yeah, हाँ. let's move to McAllister. For me, he was man of the 9, match. 9, मैन ऑफ द मैच एब्सोल्युटली. पिच पर सबसे बेस्ट प्लेयर, पिच पर दोनों साइड, नॉट अवर्स, उनकी साइड से भी, दोनों साइड से 9 एप्स. और स्टार्टिंग में येलो कार्ड मिल गया था विच वाज अनडिजर्व्ड टू बी फेयर. And that was so harsh actually. यार That was so harsh. उसे बस टच ही किया था वो, तो ऐसे ही गिर के पड़ा, पता नहीं क्या Very, होगा. very नहीं गिरा ही similar to था. Van Dijk. I don't agree कि Van Dijk को भी yellow मिलना चाहिए था, but it was just that कि यार उसने लाइक हाथ ही वैन डाइक रखा था. वैन हाँ, वैन डाइक का क्या था ना कि आई थिंक कि उसने पुश किया था, और मैकेलिस्टर वाला था कि वो 50-50 पे ही था. अभी इतना ज्यादा वो हुआ नहीं था मेरे ख्याल से. Right. मैकेलिस्टर का तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्यों येलो कार्ड दिया. बट यस, फॉर मी ही इज मैन ऑफ द मैच. फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया पासेस उसने करी थी साला को, जिसमें साला को मतलब 3-4 पासेस तो थ्रू, साला बहुत स्कोर बहुत कर बढ़िया बढ़िया. सकता था. एंड ऑब्वियसली व्हाट एन असिस्ट फॉर साला गोल. व्हाट अ पास. जो जो पेस से बॉल सोबोस्लाई ने दिया था, इट वाज नॉट इजी टू कंट्रोल इजीली. एक्चुअली. Yeah, so it was good pass. So McAllister for me, man of the match. Yes, definitely. Moving on to Salah. This is going to be an साला interesting 7.5. 7.5. 7.5. Let हाँ, me कुड ask हैव you डन this. बेटर. हाँ. Let me ask you this. अगर साला स्कोर नहीं करता तो क्या मिलती रेटिंग? 7. 7. You think इतने इतने मिस करने के बाद भी 7? That's generous. मतलब वो क्लियर, अगर आप एक्जी देखो ना उन चांसेस की, लाइक दे वर नॉट हाई स्कोरिंग चांसेस. ऐसा नहीं है कि कोई ओपन ग्लेयरिंग मिसेस थे उसमें. अच्छे, मतलब वो साला की वजह से इतने क्वालिटी चांसेस थे. अगर न्यूनेज होता तो वो शायद मेरे ख्याल से चांसेस भी नहीं हम काउंट करते. तो साला की वजह से वो चांसेस थे, आई थिंक सो. और ऊपर से साला इज अ मूवमेंट गाय. वो मैच में आपको 5-6, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साला इज अ मूवमेंट गाय. वो मैच में आपको 5-6 असिस्ट या गोल क्रिएटिंग या गोल स्कोरिंग चांसेस बना के देगा कि आप जिस पे स्कोर कर सकते हो. आइदर ही विल स्कोर और ही विल, डियास का जैसे पास था, तो कुछ ना कुछ वो बड़े मूवमेंट्स वाला गाय है. वो गेम में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है क्योंकि ही इज बेसिकली लॉस्ट हिज पेस एवरीथिंग. इतना तो नहीं, मतलब वो नहीं कह रहा कि मतलब पूरा का पूरा, पर थोड़ा स्लो हो गया है साला. बट स्टिल वो जो गेम की रीडिंग है और जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है साला, तो उसकी वजह से ही इज द मेन गाय फॉर अस. For me, sorry, अगर साला स्कोर नहीं करता, I would not be giving him more than 5, and that's generous. Simply because आप जैसे बोल रहे हो कि हाँ चलो ठीक है यार कि they were not really easy chances, but from Salah standard on any हाँ. of the day he could have हाँ, scored a साला hat. के स्टैंडर्ड से यू कैन से कि साला के स्टैंडर्ड से 5.5 ठीक है. बट Yes. ओवरऑल अगर आप पूरे उसके उसके हिसाब से कंपेयर करो, बट तो थोड़ा तो हार्श हो अगर जाता मेरे को साला को जज भी करना है तो मैं साला के स्टैंडर्ड से करूंगा. So I would, just because he scored a goal, that is the only reason, and that's a winning goal actually. So I am generous here and giving him 6.5. So that's my higher ceiling because है. फेयर Salah इनफ. could have done so much better in his, like we all know that what he can do on the pitch. So yeah. हम्म. What about Nunes? न्यूने 6.5. Nunes 6.5. फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं किया गेम. सेकेंड हाफ में लाइक बढ़िया किया, बहुत अच्छे अच्छे चीजें की, 2-4. बट फिर सब्स्टिट्यूट हो गया जब तक वो ही वाज फाइनली कमिंग इनटू द गेम. सो 6.5 बेसिकली. Yeah. I think first half, like you said कि यार first half में कुछ भी नहीं था क्योंकि 3 सेंटर बैक से ऑक्यूपाइड था एंड स्पेस वगैरह कुछ क्रिएट नहीं होती जब वो लेफ्ट कुछ एंड राइट में था. सेकंड हाफ में.
Then he started to get more space, and then he started to make those amazing runs and all that from left and right as well. So yeah, I would say 6.5 is fair. Yeah. Diaz, 7.5. 7.5. 7.5. And what if he didn't score that goal? What would you give him still? Still, I think 7. 7. I would कैरी give अच्छा him. किया था, लाइक हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉल कैरी आ रहा है तो कैरी अच्छा किया, चांसेस बनाए। और गोल के अलावा वो सेकंड वाला चांस भी था, ऑफसाइड हो गया, बट स्टिल। हाँ, but based on first half very poor, but second half he was very good, very lively, chances create कर रहे, passing वगैरह दे रहा था, अच्छी crossing, dribble वगैरह कर रहा था. So yeah, I would say for me he was 6.5. So about substitutes, Elliot. ज्यादा चांस मिले नहीं सब्स्टिट्यूट को, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। लेट 7, दो दो तीन चीजें उसने की पॉजिटिव थी। लाइन पर एक चांस बनाया था उसने, दो तीन चीजें थी पॉजिटिव, उसके पास ज्यादा मौका भी नहीं था, ज्यादा टाइम भी नहीं था, तो आई थिंक लाइक 7 इज फेयर इनफ। Yeah, I think 7 for me as well. क्योंकि जैसे ही वो आया था, I think it's his first touch was header, जो suppose like a header, then ओ, could have created. हैलेट हैलेट डी में जीत रहा है, दैट वाज Exactly. फनी। और एलियट अगर हेडर मारे तो सोच लो, मतलब अगर आप वो देता भी, सोच, सही अगर बात है। आपको और हाँ, assist फार देता पोस्ट है। पे जा भी रहा था अंदर, वो ये नहीं कि कहीं पे भी लग के कहीं पे भी जा रहा है वो डी में, हाँ, वो फार पोस्ट पे जा रहा था शायद अंदर, मतलब पोस्ट को तो exactly. हिट कर ही कर सकता वो। Exactly. So I think Elliot was good. For me, he was 7.5. Gakpo, सिक्स कुछ था नहीं करने को खास उसके पास, जब तक हाँ, I think गेम it was पास गेम very था। late in the game, so I would give him 5 average. कि ज्यादा टाइम नहीं था, आई थिंक हार्डली 2-4 मिनट का इम्पैक्ट था, कुछ दो था चार नहीं. मिनट था नहीं, सही हाँ, बात है। तो उसके अलावा we didn't had any sort of substitutions, right? We had only two subs. We made only two subs, या right? या नहीं, ग्रेविनबर्च भी था। Gravenberch, हाँ, right. Gravenberch was हाँ also very similar कि 2-4 मिनट ही थे. हाँ, बट आखिरी के मोमेंट टाइम में, लास्ट लास्ट के 2-3 मिनट में बॉल को अच्छा होल्ड किया उसने। हाँ, मिडल में Gravenberch. सेंटर में बॉल आई थी तो कैरी करने के लिए अच्छा ऑप्शन था वो, वहां पे थोड़ा नर्व सेटल हो गई थी हमारी उसके, नहीं तो ऐसे पिंग पोंग टाइप ऑफ गेम बना हुआ था तब तक वो। हाँ, Gravenberch को क्या रेटिंग दोगे आप? 7। वो 7. सिर्फ वो 5, वो 15 सेकंड या 20 सेकंड का जो भी इंस्टेंस था, 1 मिनट खेला उसमें से 15-20 सेकंड का जो इंस्टेंस था, उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव, 1-1.5 मेरे ख्याल से पॉजिटिव वहां पर। फॉर मी ग्रावनबर्च इज 5 क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, टाइम ज्यादा हाँ, नहीं नहीं था करने तो, को। और नॉट रियली लाइक यार इम्पैक्ट करने का टाइम मिला, तो या इट वाज गुड. So yeah, it's finally good. Top of the table. Looking forward to the match of Arsenal Man City. Chalu ho gaya. I think it's already 11 minutes into the game. Do you have any update? Like Yeah, I'm checking right now. let me I check, don't see let me any check, update. let me check. Like Any update? hopefully Hopefully, red card for both of them. yeah, like you said, red card for both of them. थोड़ा झगड़े वगड़े हो जाए, No, थोड़ा nothing मजा, yet. कंट्रोवर्सी क्रिएट हो Nothing जाए. yet. Nothing yet. Nothing yet. Nothing यार, चलिए कोई नहीं. So Yeah. yeah, this is it, guys. Please like the video, share, subscribe, comment, do all the good stuff. And Ishan bhai, thank you so much again for joining. Thanks. Thanks again for having me. We will be making another video soon talking about Ruben Amorim, Xabi Alonso, and potential any other Liverpool managers. So please stay tuned in. And yeah, we'll see you soon. All right. Let's Bye, stay Ishan bhai. at the top of the table. Top of the table. Yeah. All right. Bye bye. Good Cheers. night.